he is known to all of us, and he is known for his, very in-depth understanding about the educational practices, and we feel very privileged to have him on board with all of us on a very crucial topic which we have discussed over a period of 4 Sundays. This is the 4th Sunday. So on 3 Sundays we have discussed with 11 principals and almost 15 students from the school with regard to their journey during the pandemic period, that is from transition to transformation and breakdown to breakthrough. And this is the second chapter of that. We thought we must touch this very important and crucial chapter, that is the pedagogical plan, a game changer. And we thought this is the most appropriate time that we invite Ranbeer ji, as he is associated with the CBSE, and we request him, sir, to... Sir, before sir start, I have few words about sir. Sure. I mean, my words are very short. Sorry, there was a technical issue. So... Go ahead. I could not start the program. We can hear you, Dr. Shashi. We have done so many sessions. We started this organization in 2017. And from 2017, we are doing so many webinars, so many seminars with the school principal and school teachers. But after COVID 2020, we started the online sessions. But from May 2020, sir, we have developed a concept which is based on creating equity among the educators and the student for creating the awareness about NEP, which is the main issue right now. And awareness is very much important. So Mohan Pradeep Sharma, sir, Vice President of JP Group of School, sir has joined us. And the man behind this concept in equity of co-construction in educator and the students, we started this Voice of Choice program. So we have done NCR chapter successfully, and it was wonderful program. We have done finale with the presence of NCRT director and NCRT secretary Major Harsh ji. My words are very few. Sir, as everybody know about sir, sir is a regional officer in CBSE, Uttarakhand. Sir has very closely witnessed the status of school education system in remote to keep the spirit of the government education policies and necessity at the top, and putting his rigorous effort to add on every value for transformation of school education system by means of CBSE affiliated school in overall development of our nation. So sir has also awarded as prestigious World Book of Record London and Paryavaran Sanchetak Samman and Himalaya Ratna Samman and many more awards. So sir, words again, I will say words are very less in front of you. And now I would request you to please grace the August gathering with your word of wisdom. Over to you, sir. Over to you, please. आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। मुझे तो सौभाग्य मिलता है कि जब सब विद्वानों से कई जगह जगह पर मिलता हूँ, बात करता हूँ, और मेरे लिए अपने लिए भी बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मैं विद्यालय शिक्षा में CBSE में काम कर रहा हूँ। पिछले 2016 से यहाँ रीजनल ऑफिस में देहरादून रीजनल ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इलाहाबाद रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, तमाम डिपार्टमेंट्स में काम किया, परंतु जो आनंद विद्यालय शिक्षा में काम करने के दौरान है वो कहीं भी नहीं है। बस हमें थोड़ा बहुत अपनी सूझबूझ को ठीक रखना है, अपने आप को बेहतर काम के प्रति अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। जितनी मर्जी व्यवस्थाएं बन जाए, जितनी मर्जी कोई क्रियाकलाप मजबूत हो जाए, अगर हम मजबूत नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं।
फिर वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अगर वो इम्प्लीमेंट करने में हमारा फेलियर है, तो फिर उस व्यवस्था का, उस संस्था का और उस सारी व्यवस्था में काम करने वालों का सारे के सारा जिम्मेदारियों से हटने वाली बात पर हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स करता जाता है। मैं बस जस्ट आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि सारे विद्वान लोग मुझे जैसे एक पहाड़ के गांव के व्यक्ति को सम्मान देते हैं और बोलते हैं कि सब आप भी हमारे को कुछ शब्द कहिए। तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा, मैं बहुत ही रिमोट प्लेस का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। क्लास 6 में ये एप्पल की जानकारी मिली और अनपढ़ से ज्ञानी वाले सफर का व्यक्ति हूँ। ज्ञानी आप लोग हैं, परंतु मैं हाँ ये जरूर कहूंगा कि मैं उस सफर का हम सफर बहुत मजबूती से अपने आप को लेके चलता हूं। दूसरी बात, आज की विद्यालयी शिक्षा और आज के सिस्टम पर केवल और केवल मेरा एक ही चीज का कहना है कि हम ये एप्पल जरूर बच्चे को दें और उस बच्चे को जाकर जेट जेब्रा पे जो है ना, जेब्रा क्रॉसिंग में ना छोड़ दें। यही मेरा अनुरोध है। अब मैं फिर से अब दूसरी बात पे आता हूं। हमने बहुत कठिन दौर अभी देखा है पेंडेमिक का। हम जब ये बात पता लगी कि 2019 कोविड की बात आई, तो हमें पता भी नहीं था ये कोविड है क्या, किस तरह की बला है। शायद आप संभवतः जो एनसीआर एरिया में रहते होंगे, आपको पहले पता लगा होगा। यहाँ पहाड़ में तो थोड़ा सा दूर स्थान पे जो है देर में खबर भी आती है, परंतु जितना सोशल मीडिया और सब कुछ के माध्यम से पता लगा और फिर थोड़ा बहुत और ज्ञान अर्जित किया, तो 1918 की बात आई। उससे पहले भी 100 साल के अंतराल में जो आता रहा, पर हम 1918 की बात करते हैं। पूरी दुनिया से 12 करोड़ लोग चले गए थे और हिंदुस्तान से ही 2 करोड़ लोग चले गए थे। अभी हम जो अभी का ये दौर देख रहे हैं कि सब कुछ इस तरह से विपरीत परिस्थितियां लेकर आया कि जो देश अपने आप को सब तरीके से समृद्ध मानते थे, टेक्नोलॉजिकली, मेडिकली, हिंदुस्तान तो अब बहुत पीछे हम लोग। ये तो अब 2014 से थोड़ी सी जागृति आई, नहीं तो कहाँ कुछ, सब कुछ अनाप शनाप था। तो अब अगर हम सबको देखते हैं तो वो देश जो सुबह उठ के ही सारे, उस देश के मुखिया भी तमाम देशों को धमकियां दे दिया करते थे कि हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, हम उनको समाप्त कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस देश की हमारे प्रति आंख उठाने की, हमारे प्रति तरह से बोलने की। वो देश भी अपनी त्राही त्राही के हिसाब से उस छोटे से अदृश्य विषाणु से भागने लगे। तो मेरा केवल आप लोगों के बीच में ये कहना है कि सबसे पहले तो हम उस सर्वशक्तिमान व्यवस्था को हमेशा अपने साथ, अपनी उस हृदय गति से कनेक्ट रखें, जिसके लिए हम कल जन्म उत्सव मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, जन्माष्टमी का। आप सबको उसकी शुभकामनाएं भी है, जिन्होंने हमें 5000 साल पहले खुद स्वयं इस धरती पर उस चेष्टा के साथ जन्म लिया कि एक ये द्वापर की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत किस तरह की रहेगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, खुद सबको सिखा के गए और पूरा अपना जीवन कुछ कहाँ जन्म लिया, कहाँ रहे, कहाँ पालन पोषण किया और किस तरह की कला से लेकर, समृद्धि से लेकर, उस विद्वता से लेकर और ज्ञान अर्जन के लिए बात कही। आज अगर आपने मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने इसमें जिक्र किया भगवान जी का, उनकी यात्रा का और उनके उस स्थान का भी जहां से वो आखिर में गए हैं अपने इस संसार से अपनी लीला को समाप्त करके। तो मेरा केवल आप लोगों से कहना है, इस पेंडेमिक के दौर में हमने सब कठिनाइयां में देखी। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपने नाते रिश्तेदार खोए, किसी ने अपने किसी सदस्य परिवार का खोया होगा। बहुत सारे लोग जो उसकी गिरफ्त में आए अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं, भले ही ठीक हो गए, परंतु अभी भी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कुछ ना कुछ विकार लिए हुए उसमें, उसकी जकड़ में है। मेरा तो सीधा संवाद रहता है हर जगह। पहाड़ का रहने वाला हूं, देवभूमि का रहने वाला हूं और देवभूमि की हृदय स्थली से आपसे संवाद कर रहा हूं। कुछ देवभूमि के लोग भी सुन रहे होंगे और तमाम आप सब जो तमाम चकाचौंध उस भौतिकवाद की दुनिया की सब जानकारी रखते हैं। अगर हम सिंपलिसिटी को अपनाते हैं, अगर हम अपने व्यवहार को और अपने आचरण को ठीक रखते हैं और हमारे पास जो है वो समाज को ठीक से देते हैं,
तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। अभी हमारे पास इस दौरान एनईपी आई, हमारे पास इस दौरान सीखने के लिए जो परिवार से जुड़े नहीं रहते थे, जो परिवार से घर में रहने के बावजूद भी एक कमरे में भी सब इसी के साथ खेलते थे, इसी के साथ चर्चा करते थे मोबाइल के साथ, उस सब से थोड़ा सा निजात मिला। जो मातृशक्ति मुझे सुन रही है, तो माँ की उस किचन की उस खनखनाट, जो रोटी बनाने से लेकर, आटा गूंदने से लेकर और सारा सब्जियां बनाने से लेकर, उसका बच्चों को स्वाद मिला। नहीं तो हमने तो सारा कुछ आउटर वर्ल्ड पे छोड़ दिया। उस बाहरी दुनिया पे पता नहीं किस द्वेष के साथ वो खाना बना के हमें सजा के भेज रहा है, पता नहीं किस निराशा से वो उस जगह पे खाना बना रहा, हम उसको ऑनलाइन मंगाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। आज दुनिया की ये जो स्थितियां हैं, और जो अभी आपने रिसेंटली अफगानिस्तान का देखा है, वास्तविकता यही है कि जो 5000 साल पहले गांधारी ने श्राप दिया था, उसी श्राप का उपभोग कर रही वो जमीन, जो आज भी किसी भी ना शासक के लिए महफूज है, ना किसी इंसान के लिए महफूज है, ना कोई वहां रहना चाहता है। आप देखिए कैसे बंद जहाज में कैसे भाग रहा है और कैसे लटक जा रहा है। उसको इस बात की, केवल और केवल इस बात की चिंता है, मैं इस स्थान से जाऊं, फिर चाहे डूब मरूं, चाहे फिर कहीं गिर जाऊं। मेरा केवल आप लोगों से अनुरोध, आप बहुत विद्वान लोग हैं, मुझे तो इतना ज्यादा विद्वता का आभास है नहीं, पर एक चीज जरूर कहूंगा, अगर हम, जो बच्चे हमारे पास हमारे कैंपस में पढ़ते हैं, जो बच्चे हमसे शिक्षा लेते हैं, और खासकर विद्यालयी शिक्षा, उसमें हमें उनसे कनेक्टिविटी बनानी, हमें उनसे जुड़ना होगा। हम इस संसार को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अपने सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य के तौर पर हमें मिला है, और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ काम में हमें लगाया गया है शिक्षा जगत में। विद्यालय शिक्षा, चाहे उच्चतर शिक्षा हो, किसी भी तरह की शिक्षा हो, हमें उसमें लगाया गया है, जिससे कि जनरेशन का सुधार हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम इंसानियत की रक्षा कर पाए तो सब समाज में मजबूत होगा, अन्यथा अभी तो अफगानिस्तान ही, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा संवाद की तरफ और लेके जाता हूं। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में सारा विपक्ष एक होता चला जाए, उस देश में समझ लीजिए कि उस देश का जो राजा है या उस देश का जो प्रमुख है, वो बहुत ईमानदार है, सन्यासी प्रवृत्ति का है और बेहतर काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है, वो इतनी मजबूत हम सबके लिए है कि जो हम 412 करोड़ रुपए हुर्रियत में खर्च करते थे, आज कैसे बच गया? आज देश की सड़कें कैसे ठीक हो रही है? आज हमारा सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है, परंतु हम उस जनरेशन को, जो संतान आ रही है, उसको ठीक करने की बजाय हम उनके आगे हाथ खड़े कर दे रहे हैं, एक हार के तौर पर अपने आप को खड़ा कर दे रहे हैं, इस बात के लिए कि वो जैसा चाहें वैसा करते चले जाएं। हम अपने संस्कार ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, हम अपने ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, हम अपनी नॉलेज को आगे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, और वो उसका कारण केवल और केवल एक है कि हम भौतिकवाद की उस लालसा में घूम रहे हैं। एक का दो, दो का चार, और कई तरह का, और इतना बड़ा हाजमा लिया हुआ हर व्यक्ति है, तो पता नहीं सब कुछ ही खा जाए। 1 करोड़ के बाद 4 करोड़ के बाद 400 करोड़ के बाद 5000 करोड़ के बाद, जो बहुत सारे लोगों के बारे में आप सुनते हैं। मुझे तो केवल आप लोगों के बीच में ये कहना है कि जो हमारी जनरेशन आ रही विद्वता से परिपूर्ण है, हमारे उस जन्म उस समय के जब हम कुछ भी जानते नहीं थे, आज का छोटा सा बच्चा, एक 3 साल का बच्चा मोबाइल का पूरा ऑपरेशन जानता, 5 साल का बच्चा सब कुछ बता देता है, परंतु उसको हम दिशा नहीं दे पा रहे, उसको दिशाहीन करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। 3 पी है, एक प्रिंसिपल, एक प्यूपल और एक पेरेंट्स। तीनों का अगर मजबूत समावेश हो तो हमारी संस्कार, संस्कृति और सभ्यता कहीं हट नहीं सकती। 300 हमारे पास हमेशा मजबूती से बने रहे। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ रहा है, हमने विद्यालय पे डाल दिया। विद्यालय ने जो है सुबह 8 बजे से 2 बजे वाले सिस्टम में पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिया, बाकी किसी और के हवाले कर दिया। कैसे चले सिस्टम? कितने भी इस तरह के युग पुरुष आ जाएं, वो भी इस धरती को सुधार नहीं सकते जब तक हम अपने आप से सुधरेंगे नहीं, अपने आप से उस व्यवस्था से कनेक्टेड नहीं रहेंगे कि जहां पर कि हमें
जिस काम के लिए लगा गया है उसमें हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती चली जाए। 2021 की परीक्षाएं नहीं हो पाई, 99.2% 27% रिजल्ट मेरे रीजन का है और 99.68% भी रिजल्ट है, 99.7% रिजल्ट है, उसके बावजूद भी डिससेटिस्फेक्शन है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि जब सिस्टम ने हमारे को बिल्कुल धोखे में रख दिया। किस तरह के समाज की हम परिकल्पना करते हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, जितने मेरे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ इस तरह का करना होगा कि इस भौतिकवाद की लालसा पे भी थोड़ा सा अंकुश लगे और जो बच्चा या जो व्यक्ति समाज में आए वो अपने लिए भी करे, परिवार के लिए भी करे, अपनी मातृशक्ति के लिए भी करे, अपनी जन्मदात्री भूमि के लिए भी करे, परंतु वो देश के लिए जरूर करे। अगर देश रहेगा, राज्य रहेगा, हमारी ये भूमि रहेगी, हमारी कनेक्टिविटी जन्मदात्री भूमि से रहेगी, हमारी कनेक्टिविटी उस व्यवस्था से रहेगी जो व्यवस्था ऋग्वेद से लेकर उल्लेखित है, भगवान के द्वारा लिखित ग्रंथ से लेकर उल्लेखित, और आज तक हम उसको देखे जा रहे हैं, तो हम मजबूत रहेंगे। दुनिया पे जितना शासन, हिंदुस्तान कितना बड़ा था भारत के नाम से, कंबोडिया, हम सब कुछ कितने कंट्री यहाँ पर, आज सब सिमट के आते चले गए और आज हम कहते हैं सब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हमारी ये व्यवस्था है, हमारी वो व्यवस्था है, हमारी वो व्यवस्था। हमारे एक संतान हम पढ़ा लिखा के उसको IITian बना के 7 समुंदर पार भेज देते हैं, अपने माँ को देखने नहीं आता, अपने पिताजी को देखने नहीं आता, वो 7 समुंदर पार जाके बसने के बाद वो देखता नहीं, वापस अपनी धरती को नहीं देखता। आप जो मर्जी व्यवस्थाएं करते रहिए, मेरा तो केवल आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको इस कनेक्टिविटी से, इस धरती से, इस धरा से जोड़िए कि वो धरा के लिए भी काम करे, आपके लिए भी काम करे, समाज के लिए भी काम करे और उस इंसानियत की रक्षा के लिए काम करे जो सबसे श्रेष्ठ जन्म प्रभु ने इस संसार में, इस घोर कलयुग में हमें दिया है। हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से हम अपयश भोगें। देने के लिए तो जिसके पास जो होगा वही देगा, जिसके पास एंगर होगा वो एंगर देगा, जिसके पास ईगो होगी वो ईगो देगा, जिसके पास एरोगेंस होगा वो एरोगेंस। इन सब में, तमाम तीनों बातों में बड़ा अंतर। हम क्रोध मुक्त समाज की बात करते हैं, परंतु आप देखिए कैसे किसी का भी ऊपर भी कोई हाथ चला देता है, कैसे किसी को भी खत्म कर देता है। हम एक सैद्धांतिक तौर पे अपने बच्चों से अगर पूछेंगे, मैं तमाम जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई 5 पीढ़ी का भी अपने नाम बता दे पूरी तरह से, 5 पीढ़ी के अपने पूर्वजों के नाम, मेरे ख्याल से 10% भी सुनने वालों में से होंगे जो 5 पीढ़ी का नाम नहीं बता पाए। बता देंगे, नहीं बता सकते, नहीं हम उस तरह से कनेक्ट हो सकते, नहीं हम उन चीजों को नहीं ले पाते, क्योंकि हमने वो नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं सिखाया, ना जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया उसको हमने रास्ते में छोड़ दिया और हम उस भौतिकवाद की लालसा में चल पड़े। आज का विषय आपका बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, परंतु वो आप सब विद्वानों के लिए है। मेरी तरफ से तो केवल यही अपील और यही अर्ज रहेगी। मुझे दिन का याद रहता, दिनांक का याद रहता, मुझे दिन का याद नहीं रहता कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, क्योंकि सुबह बैठ जाता हूँ 9 बजे और रात को शाम को 8 बजे के बाद ही संभवतः दफ्तर से निकलता हूँ। आज शनिवार है, 2 मीटिंग्स अटेंड करी हेड एग्जामिनर्स की, फिर मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए बैठा हूँ। अभी मैं भी मेरे भी अपने बच्चे हैं, परिवार है, 2 बेटियां हैं, वो भी वेट करती हैं, पत्नी भी वेट करती है, घर में और भी परिवार के लोग हैं, परंतु मेरी प्रायोरिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से है कि मैं सबसे पहले इस बेहतरीन सिस्टम में काम कर रहा हूं जिसमें हम बच्चों के परवरिश के लिए विद्यालयों के माध्यम से काम करते हैं, जिसमें हम बच्चों की देखरेख करते हैं, जिसमें हम समाज को मोटिवेट करने का दायित्व निभाते हैं। दूसरी बात कि हम इस तरह से भी काम करें, अगर हम कहीं से गुजरे भी तो कोई भी व्यक्ति हमें देखे कि अरे यार ये व्यक्ति तो फलाने विद्यालय में प्रिंसिपल है, ये व्यक्ति तो फलाने विद्यालय में टीचर है, ये तो डॉक्टर शर्मा जी हैं, ये तो डॉक्टर पांडे जी हैं, ये तो फलाने व्यक्ति हैं, और वो फ्रेग्रेंस अपने आप से जाए और लोग उसके तरफ आकर्षित हों इस बात के लिए कि कैसा विद्वान व्यक्ति और कैसा सरल व्यक्ति या कैसा सिंपल व्यक्ति। हम दुनिया जहां में जाते हैं दिखाते हैं सब चीजें, अपने आप को उस आउटर वर्ल्ड में दिखाते हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले घर में बच्चों को नहीं देखते, परंतु पहले इसकी सांस जरूर देखते हैं, ये जिंदा है या मर गया।
रात को बेड पे जाते हैं 11 बजे तो 10:59 पे 10:59 पे इसको देखते हैं, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। उस आउटर वर्ल्ड पे जुड़े रहने को हम मजबूर हो जाते हैं। अपने आप को इतना चकाचौंध में ला दिया है कि हम किसी जगह अगर घूमने भी जाते हैं, अगर आप कहीं मसूरी भी आओगे, जब तक वो यात्रा पूरी हो तब तक आपकी फेसबुक बहुत सारी अपलोड हो जाएगी, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फोटोग्राफ चले जाएंगे, और इनर वर्ल्ड हमने दबा दिया। इनर वर्ल्ड को जागृत करने की चेष्टा होनी चाहिए, तब हम कुछ समाज को दे पाएंगे। अन्यथा होगा क्या, आप कितने ही भी वेबिनार कर लेंगे, संभवतः में अगर आप 100 वेबिनार कर लेंगे तो शायद सार्थकता जो निकल के आई और रिजल्ट निकल के आएगा तो एक आध में कोई 2-4% के लिए निकल के आएगा। हम कम से कम अपने 10-20% को ठीक करने का जिम्मा लेंगे। टीचर जो अपनी क्लास में इस तरह की डिलीवरी रखे, अपने उस पीरियड के उस सब्जेक्ट के विषय के अंत में कुछ मोटिवेशनल सकारात्मक चीजों को लेके आए और 2 मिनट के लिए बच्चों के बीच में रखे। आज हम क्या हो गया, हम सुबह सारे गणपति जी, भगवान जी, फूल पत्तियां सब एक उस प्रोफेशनल व्यक्ति की उस साइड से उतारते हैं, उनको पैसा मिलता है और फिर आगे उसको ट्रांसफर करते हैं। मैंने रमेश जी को भेजा, रमेश जी ने कहा यार ये तो मेरे पास है, उसने फॉरवर्ड कर दिया आगे, उन्हें देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने ही नहीं पढ़ा था, मैंने उस भावना से भेजा ही नहीं। हमने अपने थॉट प्रोसेस ही बंद कर दिया, हमने अपने विचार उद्गम करने का वो स्थान जो है वो बंद कर दिया। जब हमारे विचार ही हमने बंद कर दिए तो वो तो नकल उतारा हुआ तो हम किसी को भी भेज सकते हैं। ना मैंने पढ़ा, ना उसने पढ़ा, ना कोई, हाँ देख सब रहे हैं, सब गीता के उपदेश भेज रहे हैं, सब भगवान जी के बड़े तमाम अल्लाह के सबके और सारे यीशु मसीह के सब कुछ भेज रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथों के सब कुछ भेज रहे हैं, पर ये पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रंथ क्या बताता है, क्योंकि उसके उस अंश को ना मैंने समझा, ना मैं आगे समझाने की उस चेष्टा से भेज रहा हूं। तो मेरा केवल आप लोगों के बीच में यही कहना है, जिस फील्ड में जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, कनेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अगर हमारे पास मोबाइल विकल्प के तौर पर क्लासेस में हमने लाया, जबकि हमने बंद किया हुआ था, आज हमने इसको विकल्प के तौर पर लिया। केवल विकल्प है, ये समाधान नहीं है, ये केवल विकल्प है। क्यों हम इतने सारे राष्ट्रपति हुए, क्यों हम कलाम साहब को याद करते हैं, क्यों बाकी को नहीं याद करते? क्यों इतने सारे प्रधानमंत्री हो तो क्यों इंदिरा जी को और वाजपेयी जी को और आज मोदी जी को सर्वधार्य करते हैं? क्यों हम एक जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही याद करते हैं? क्यों देश की उस आजादी के लिए गांधी जी को याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने लीड किया है। क्या उस समय 36 करोड़ लोगों में हिंदुस्तान में और नहीं थे? क्यों गांधी जी ने उस बात को, गांधी जी को ही हमने शिरोधार्य किया, क्यों उनको राष्ट्रपिता कहा? क्योंकि हमें किसी न किसी क्षेत्र में अपने घर से लेकर समाज तक के लिए, और उस जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मेरी लिमिटेशंस मुझे सरकार ने भी दी है, मुझे उस जगह पे इस तरह से काम करना होगा कि मैं इंडिस्पेंसेबल बनूं। अनिवार्य स्थिति में काम, अनिवार्य रूप से लोगों के लिए अनिवार्यता के तौर पर बनो कि लोग मुझे ढूंढें, मुझसे कनेक्ट होने के लिए कोशिश करें। मेरा केवल यही आप लोगों के बीच में संवाद का मेरा एक छोटा सा एक उद्बोधन के तौर पर आप लोगों से अपील भी है। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा सबसे यही कहना है, जितनी मर्जी आप किसी भी जगह रह लीजिए, जो मर्जी व्यवस्था में रह लीजिए, अगर धरा से जुड़ के नहीं रहेंगे, उस धरती से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो जिस दिन वो धरती छोड़ देगी उस दिन अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। ना हमें हिंदुस्तानी कहे जाएंगे, ना हम उत्तराखंडी कहे जाएंगे, ना हम दिल्ली वाले कहे जाएंगे, ना हम इस हिंदुस्तान के उस राष्ट्र की गरिमा वाले कहे जाएंगे, ना हमें कोई ये पहचानेगा कि ये उस हिंदुस्तान की उस धरती से है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन धरती है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, जहां पे कि भगवानों ने भी जन्म लिया, जहां के उस सनातन व्यवस्था का पूरे विश्व में परचम लहराता था एक टाइम। तो हम अपनी पहचान ही खो जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर जन जागृति करनी चाहिए। हम सबको मिलकर जिस भी तरह से हमें, चाहे 40 मिनट का एक टीचर को पीरियड भी मिलता है, वो अपने लास्ट के टाइम में अपने उस 2 मिनट का समय ले, अंतिम डिलीवरी में देश के उन लोगों के बारे में बताएं, विवेकानंद जी के बारे में बताएं, गांधी जी के बारे में बताएं, कलाम साहब के बारे में बताएं, झांसी की रानी के बारे में बताएं, अहिल्या बाई के बारे में बताएं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बताएं, कितनी विभूतियां हमारे देश में है, और चाणक्य के बारे में बताएं, और तमाम और भी है, हमारे तमाम ग्रंथ हैं,
किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि हम अपयश कमाने का काम करें, हम मानव जाति का संहार करें, किसी भी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। परंतु आज क्या है, हम तो बड़ी गाड़ी में धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं, भले ही बेचारा किसी के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हमें इस नैतिक शिक्षा को बलवत करना होगा। मेरा आप सबसे यही कहना है। एनईपी इस बीच में आई, इस बीच में हमारा अभी एनसीएफ 2021 तैयारी की तरफ है, हमारा अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की व्यवस्था बिल्कुल तैयारी पर है। ये सब को हम अगर लेते हैं तो हमारी सफलता तभी होगी, हम चाहे 5+3+3+4 की व्यवस्था किस तरह से भी ले आए, +2 को 4 पार्ट में बांट दें, जब तक हमारी कनेक्टिविटी उस छोटे से बच्चे से नहीं होगी जो समाज में परिवार से लेकर आपके विद्यालय से लेकर हायर एजुकेशन तक नहीं जा रहा है, और जब तक हम उसको उस चीजों से नहीं समझाएंगे कि ये हिंदुस्तान और ये हमारी धरती किस तरह की है, वो शिक्षा केवल उसको भौतिकवाद की शिक्षा दे सकती है, भौतिकवाद की प्रतिपूर्ति कर सकती है, इंसानियत की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती। आप सब नारी शक्ति को मेरी तरफ से प्रणाम। सर आपको, शर्मा साहब को भी प्रणाम। जितनों ने मेरी वॉइस सुनी, आवाज सुनी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के उस पर्व की भी शुभकामनाएं जो कि इंसानियत की शिक्षा के लिए हमें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देके चले गए। हमारी काम करने की क्षमताएं असीम है। हमें भगवान ने जन्म के समय ही ऐसी ऊर्जा दी है, जिस ऊर्जा को जलाने के लिए हमें सकारात्मक रास्ते पे अपनी यात्रा को शुरू करना होगा, और उस यात्रा की उस गाड़ी को हमें बहुत बेहतरीन तरीके से सावधानी से चलाना होगा कि हम जब अपनी उम्र लेके चले जाएं तो लोग हमारे लिए पछतावा रखें, हमारे लिए कहें कि वो व्यक्ति इतना काबिल था, उसने घर से लेकर समाज तक ये व्यवस्था बनाई, आज उसका नाम इसलिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। डॉक्टर शर्मा मैम, जो आप जितने आप इस एडुटॉक की तरफ से करती हैं काम, बहुत बेहतरीन आपके बारे में मैंने आज भी, मुझे कुछ लोगों ने बताया टेलीफोन करके, जब आपका शायद ये मेरा नाम उसमें देखा होगा तो कुछ लोगों ने कॉल किया था मेरे को, बताया कि बहुत अच्छा काम करते हैं। आप सब भी बहुत अच्छा काम करिए, और सब लोग जितने इस प्लेटफॉर्म पे, अगर कोई बच्चे भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने आप को पहले समर्पण की भावना से लेके आइए, अपने आप को पहले उस समर्पण की भावना से लेके आइए, उस तर्पण की भावना से लेके आइए कि मुझे अपने समर्पण से और तर्पण से जो अर्जित करने को मिलेगा उसको फिर समाज को अर्पित करिए, उसको फिर देश को अर्पित करिए, आपका रास्ता सुगम होता चला जाएगा। मैं तो एक पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपके बीच में फिर दोहरा रहा हूं, ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली, हिंदी मीडियम के गांव की व्यवस्था से पढ़ के आया हूं। ये कोई बताने वाला नहीं था, पढ़ किस लिए रहे हो, ये कोई समझाने वाला नहीं था, पढ़ के बनोगे क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया 6 साल, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डिपार्टमेंट में सीसीआरएस में झांसी मिला, फिर उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई के डिपार्टमेंट में सीडो में गया, आगरा में काम किया सीएफ सेंट्रल फूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, फिर सीबीएसई में आया। जब सीबीएसई में आया मुझे पता ही नहीं था सीबीएसई में क्लास 10 के लिए क्या बोलते हैं, 12th के लिए। आज की तारीख में मैं 16 रीजन में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक एक टीचर से, एक एक प्रिंसिपल से और एक एक मैनेजमेंट के हर व्यक्ति से कनेक्टेड हूँ। मेरे अगर कोई प्रिंसिपल उत्तराखंड के यहाँ पे मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, वो आपको बता सकते हैं। तो मेरा अपना एक मानना है कि जब हमारा कनेक्शन ठीक होगा परिवार से, हमारा कनेक्शन ठीक होगा संतान से, हमारा कनेक्शन ठीक होगा अपने कार्यस्थल से, अपने उस छत से जो छत हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और हमारा कनेक्शन ठीक होगा अगर देश से, तो कहीं भी दूसरा रास्ता आपको मिलेगा नहीं। एक ही राह मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्रगति की, इंसानियत की रक्षा की और देश के उन्नति की, जिसमें हम सबकी उन्नति। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की भी, और इस तरह के आयोजन में मुझे जैसे व्यक्ति को शामिल करने के लिए भी आपको सादर धन्यवाद, आभार। मैं आप सबको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं, आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो समाज में इस तरह की जन जागृति लेके आते हैं। जरूर कुछ ना कुछ अपने अपने प्लेटफॉर्म से करते रहिए, फिर कभी सौभाग्य मिलेगा, जरूर आपसे बात करेंगे, फिर कभी, अभी तो ऑनलाइन हम वर्चुअल बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बेसिस पे इस तरह से बात कर रहे हैं,
अगर मुझे कभी किसी तरह संवाद करने को मिलेगा, जब फिजिकल प्रेजेंस में कभी मौका मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ उद्बोधन के लिए अपने जो विचार है वो आपके बीच में रखूंगा। एक सिंपल तरीके से जीवन जीने की लालसा जीता हूं। अभी संभवतः मेरी 5.5 साल की नौकरी है, मेरी उम्र का आपको पता लग गया होगा कितनी है, पर ये मान के चलता हूं कि जो मुझ समय विद्यालय शिक्षा में काम करने को मिल रहा है उसका तो सदुपयोग करूंगा ही करूंगा। आप जैसे विद्वानों से कुछ सीखूंगा और फिर आगे की कार्यवाही के लिए काम करने के लिए तैयारी रखूंगा। कोशिश करूंगा इस जन्मदात्री भूमि, देवभूमि, जिसको कि हिमालयी परिक्षेत्र की भूमि को ऋग्वेद में भी मनीषियों और देवताओं की भूमि से संबोधित किया गया है। मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से थोड़ा सा भी अंशदान, कुछ भी एक छोटा से छोटा सूक्ष्म अंशदान मेरी तरफ से भी इस देवभूमि के लिए और देश के लिए हो जाए, चाहे कुछ भी हो। बहुत बड़ा तो नहीं कल्पना कर सकता, ना कर सकता हूं, ना इतनी कोई हैसियत है, परंतु कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आप सबसे जुड़कर कुछ सीख कर, कुछ सिखाकर आगे के मार्ग को प्रशस्त करूं, आगे चलने की उस दिशा को बेहतर करता रहूं। कलाम साहब ने कहा है कि अपनी यात्रा शुरू करिए, जहां तक दिखाई दे रहा वहां पहुंच जाइए, अगला रास्ता अपने आप मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका कोटि से धन्यवाद, आप सबको कोटि से शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो जरूर हमारे शब्दों से, हमारे उस उद्गार से, हमारे उद्बोधन से जरूर कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह देश समृद्ध होगा। आज जो हमारे मुखिया हैं, जो देश को ऊर्जा से परिपूर्ण करने की दिशा दे रहे हैं, आपने देखा होगा लाल किले की प्राचीर से किस तरह से शिक्षा के बारे में बताया। अगर 10 मिनट वो शिक्षा के लिए देते हैं और पिछले 4 साल से हमारे बच्चों के हर साल 1 दिन पूरा देते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये तो लोगों के तो अपना हाजमा इतना बड़ा है, अपनी पूर्ति नहीं पहली होती, देश की बात तो दूर है। धन्यवाद, प्रणाम सर। थैंक यू। आपके आने से आपकी वाणी जो है वो लोगों के कान से दिल तक पहुंच गई। धन्यवाद। और हम सब गदगद हो गए आपकी बात सुन के। धन्यवाद। और जो हम चाहते थे इस फोरम के माध्यम से, उसकी सबसे बड़ी कड़ी ये थी जो मैंने तो आपको बहुत बार सुना है, और मैं डॉक्टर शशि से ये कहता था कि सर इतने साधारण है, एक बार जुड़ जाएं तो हम सब गदगद हो जाएंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। और सर आपका संदेश बिल्कुल हम लेके जाएंगे, और हम इतने प्रोत्साहित हुए आपके इन शब्दों से। मैं बिल्कुल इस बात की आपको एक वचन देता हूं कि हम अपना ये कार्यक्रम मुहिम जारी रखेंगे, और जिन लोगों ने आज आपको सुना है वो इतने प्रभावित होंगे सर। मैं इस उम्र में, मैं 70 को छू गया हूं, और मैं आज सुन के आपकी बातों को इतना प्रेरित हुआ हूं कि जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है अगर हम इतनी साधारण सी बात आपकी समझ जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए और सबको अपना टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आमंत्रित कर सकते हैं, कभी भी आप कह सकते हैं। आप मुझे कभी ऐसे भी कहेंगे, मैं पहुंच जाऊंगा जहां पे कोई आयोजन होगा। बस मुझे समय का थोड़ा सा, क्योंकि आपके समय की बाध्यता है, मैं फिर जब थोड़ा सा अपना समय के हिसाब से मुझे जो समय देंगे आप, उसमें मैं जरूर कुछ कोशिश करूंगा कुछ इस तरह की बात लेके आने की, जिससे कि कुछ तो ठीक हो, और कुछ मैं सीखने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। और ये बुनियादी बात थी सर आपने जो कही, बाकी सब बातें फजूल की हैं, वो सब हो जाएंगी अगर ये बात समझ में आ जाए। और धन्यवाद सर, धन्यवाद, दिल से, दिल से। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत रहेगी या मैं जुड़ा रहूं अभी? जी सर, जी सर, आप यू कैन नाउ, बिकॉज यू आर सो, आप इतने कमिटेड हैं। मुझे मालूम है कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, आपको 2 मिनट भी क्षण नहीं मिलते, तो हम अनुग्रहित हुए सर। आप प्लीज यू कैन नाउ टेक केयर, गो होम। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। साथियों, जिन लोगों ने सुना रणबीर जी को, हम यही चाहते थे, हमारी यही एक
कल्पना थी, मैंने बहुत सारी बार सुना, आपने भी बहुत सारी बार सुना। जितनी कुछ बात कही, अगर वो हम उसका 10% भी लेके घर को जाएंगे तो कोई पेडागोगिकल प्लान या कोई भी इंगेज मॉडल, वो सब एक तरफ रह जाएंगे। यही एक बात इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शजी, आपको हैंड ओवर करता हूँ। यस, थैंक यू सो मच सर। और हम आगे बढ़ाते हैं। आज टुडे वी हैव इनवाइटेड अ वेरी prestigious personality with us, Shri Sahil Aggarwal ji. Sahil Aggarwal sir is an educationist and social entrepreneur. He has founded Rishihood University and Rashtram School of Public Leadership. Sir has authored a book on public policy, designed a game on politics, and keep writing for newspaper and web magazines. He hails from Sonipat. Sir, we have invited you here to share with us the kind of opening in admission in various courses in Rishihood University, and also please share with us what are the offers and scholarships extended to the schools. We understand, sir, that your university extend the growth of school. Now we request you to share your words and thoughts about university, sir. Over to you, Sahil, sir. Thank you very much, Dr. Shashi and Mohan ji for inviting me here. मैं तो रणबीर जी के उद्बोधन से बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। मैं बताता हूँ कि उन्होंने काम आसान कैसे कर दिया। जब रणबीर जी ने एक बात बताई कि आईआईटी से निकल करके बड़े सारे जो बच्चे हैं वो विदेश चले जाते हैं, वहां जाके सेटल हो जाते हैं, देश को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैं कॉलेज गया, मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा। 2010 से 14 के बीच में मैं आईआईटी दिल्ली में था, बीटेक कर रहा था। तो हमें भी यही हमारे अंदर भी यही बात भरी जाती थी कि अब आपको अच्छी जॉब लेनी है, आपको फॉरेन कंपनी में सेलेक्ट हो जाना है और आपको अब चले जाना है। बट उन दिनों देश में बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा था। आप सबको तो ध्यान होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक मूवमेंट चल रही थी। अन्ना हजारे उस समय बड़े सारे युवाओं को इंस्पायर कर रहे थे, उनमें से एक युवा मैं भी था। तो अपने कॉलेज के हमने टीम बना ली, हम आंदोलन में जुड़ गए, हम एंटी करप्शन पॉलिसीज को स्टडी करने लगे, हम रैली में जाने लगे। एक बार तो हमें गिरफ्तार भी कर लिया गया, मैं जेल भी गया उस उम्र में। ये सब जब हो रहा था तो हमें मुझे पता लगा कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। ऐसे और भी लोग हैं, जो युवा लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ये सब आईआईटी के लोग हैं। मतलब अगर हम चाहते तो हम आराम से हॉस्टल में बैठते, अपनी पढ़ाई पूरी करते और हमारा कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता। बट वो सब ये इस तरह की चिंता छोड़ करके ऐसी मूवमेंट में जुड़ गए। और उसके साथ साथ बड़े सारे ऐसे अनुभव हुए कि हम पास में एक वहां पे बस्ती स्लम एरिया है हमारे कैंपस के पास, तो उधर हम हर सप्ताह में एक बार जाकर के वहां के बच्चे जो अधिकतर पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कोई रिक्शा वाले का काम करता है, उनके परिवारों के बच्चों को हम पढ़ाने लग गए। उससे उनको तो पता नहीं कितनी पढ़ाई हुई, हमारी बहुत पढ़ाई होने लग गई उससे, क्योंकि हमें सोसाइटी समझ में आने लग गई और सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पाए, ऐसा एक इंटरेस्ट जगना शुरू हो गया। तो रणबीर जी की बात तो एकदम ठीक है कि जैसा हो रहा है देश में वो सही नहीं है, पर जो आगे होने वाला है उसके सिग्नल्स मेरे को बड़े पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि मुझे एक युवा शक्ति अपने साथ ऐसी नजर आ रही है जो इस तरह से देश के लिए काम करने के लिए तैयार है। तो हमारा सफर ऐसे शुरू हुआ। फिर मैं कॉलेज से जब निकला तो मुझे लगा कि अब मुझे सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है। तब जब मैं कॉलेज में था तब मुझे पता नहीं था कि सोशल एंटरप्रेन्योर भी कोई प्रोफेशन होता है। फिर ये काम करते करते हमें इस चीज के बारे में जानकारी हुई, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, शिक्षा, ये सारे क्षेत्रों में हमें समझ आने लगी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे एजुकेशन के फील्ड में सोशल एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना है। और हमने ये तय किया कि हम देश के ऐसे युवाओं को जो सोशल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उनको ढूंढेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको मेंटर करेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और वैसे लोग इसी फील्ड में अपना करियर बना पाए, इसके लिए उनको तैयार करेंगे, ताकि जो सोशल वर्क है वो केवल वॉलंटियरिंग तक सीमित ना रह जाए, उसके अंदर करियर्स बन पाए। जो आज हम काम कर रहे हैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, वो उसी का एक क्या बोलेंगे, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। और ये हुआ कैसे पिछले 5-6 सालों में, इस पे थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे को शशि जी ने कहा कि बच्चों के लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है और स्कूल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो
एक युवा के अंदर जो एनर्जी है, जो उसके अंदर एक पैशन है, अगर हमने उसको सही दिशा दे दी तो वो देश के काम में जुड़ जाएगा। ऐसा हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, हमने समझा। ये कोई मतलब कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। हमने ऐसा देखा पिछले 7 सालों में कि 2000 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया जो कि देश के टॉप कॉलेजेस से पढ़े, और उनको लगा कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ उनको देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। हमारे साथ लॉयर्स जुड़े, इंजीनियर्स जुड़े, ह्यूमैनिटीज के छात्र जुड़े, मैनेजमेंट के छात्र जुड़े, अच्छी अच्छी कंपनीज में जो काम करते हैं वो जुड़े, एनआरआईज वो छोड़ करके अपनी कंपनीज बाहर से इधर आ गए देश में। कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है। वो सब इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए जुड़े क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे उनको कुछ ट्रेनिंग मिल पाएगी, कुछ मेंटरशिप मिल पाएगी, एक नेटवर्क मिल पाएगा, सपोर्ट सिस्टम मिल पाएगा, कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ। उनको लगेगा कि उनके साथ काम करने वाले और लोग हैं, और वो इस फील्ड में, इस तरह के फील्ड्स में अलग अलग जगहों पे काम करने लग गए। तो ये करते करते हमें लगा कि इस चीज को फॉर्मली एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में करना चाहिए, ऐसा केवल एक युवा संगठन की तरह नहीं करना चाहिए। तो हमने लोगों से बात करनी शुरू की कि लेट अस क्रिएट अ यूनिवर्सिटी which prepares people for social impact. So we became India's first university for social impact. And now what we are doing is we have created an ecosystem where we have academic areas like creativity, entrepreneurship, healthcare, education, public policy. इस तरह के areas को हमने साथ में लेके आए, so that there is like a collective approach where students who are interested in doing something for the society, they can come together, they can learn successfully about their profession, but also learn how to utilize that knowledge for social impact. So we are just very new university. It's our first year. We are a brand new university, but the kind of feedback that we are getting, the kind of response that we are getting from students, from parents, from teachers, from principals, it's highly encouraging. From industry, from public leaders. So for example, a lot of Padma Shri awardees, some parliamentarians, some top scientists, they are associated with us and they are guiding us on how to develop a curriculum which inspires students to do more for the society. रणबीर जी ने अपने इसमें एक बात बताई थी, विवेकानंद जी, हम ऐसे लोग से और सीखना चाहिए और अभी हम उनको भूलते जा रहे हैं। 2015 में उन्हीं के मैं कंप्लीट वर्क्स पढ़ रहा था, उनके 9 वॉल्यूम्स हैं विवेकानंद। तो जब मैं उनको पढ़ रहा था तो उसमें एक शब्द मिला, ऋषिहुड। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ऋषिहुड की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे चाइल्डहुड, बच्चा होने की स्थिति चाइल्डहुड, मदर होने की स्थिति मदरहुड, वैसे ही ऋषि होने की स्थिति, द स्टेज ऑफ बीइंग अ ऋषि, दैट इज ऋषिहुड. सो वी शुड ऑल एस्पायर टू अल्टीमेटली अचीव दैट स्टेज, एंड द रोल ऑफ एजुकेशन is to help a person achieve that stage. And that is what Ranbeer ji was also saying, that all of us as educators, it is our responsibility, our professional, our moral, our civilizational, our national responsibility to help our students reach that stage. So we thought that this is the appropriate name to signify the purpose of education, and that's why we kept that name as Rishihood University of this institution. There is a very beautiful shlok that they use, which is called Atmane Moksharth Jagat Hitaya Cha. For the moksha of the self, for the salvation of ourself and the benefit of the world. So ये चीजें हमें वो पढ़ के पता लगा कि ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, मतलब ये चीजें, ये दोनों काम साथ में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ऋषि बनना है तो हमें कहीं जंगल में चले जाना है और हमें बस तपस्या करते रहना है। जब मैं अपने मोक्ष के लिए काम कर रहा हूं तो उसी से मैं जगत के हित में भी काम कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। तो जब वो बता रहे थे रणबीर जी कि हम जब आउटर वर्ल्ड में इतना घुस गए कि हम इनर वर्ल्ड को भूल गए, जब हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे हमारे आउटर वर्ल्ड का भी बेनिफिट होता है, और कोई उसका तरीका ही नहीं। सो वी फॉर्चुनेटली फाउंड दैट नाउ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस. Now parents are actually interested in learning more about this because they have realized that only professional education, only education which is linked to careers and jobs and money, it's not going to help the students in the long run. It is creating frustration, it is creating midlife crisis, it is creating stress, it is creating discord in the society. But when we teach the students this art of spirituality, this formula of happily living from a spiritual perspective that this country has given to us, I think that is when the students start making a very deep and transformational shift in their mind. So इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि how do we know that this is happening? We launched an online course on understanding Sri Aurobindo. Next year Sri Aurobindo की 150th birth anniversary है.
So Sri Aurobindo has been one of the greatest gurus of this land. So we thought, let's create a course so that more and more people can know about him. More than 50 people, from not just from India but also outside, they paid money to understand the life of Sri Aurobindo for a 1-year course. And we ourselves were surprised that this is the kind of desire to learn that is now present in the society. We could not have done something like this 10 years ago. Something very significant is happening in the mindset of people, because now they are realizing that the real work that has to happen is on the individual. And that is where the topic that you have kept, Mohanji and Shashiji, today, it's very relevant, because the pedagogical plan has to be derived from who is the recipient of that pedagogy and who is delivering that pedagogy. And both of these are minds and souls, right? They are not human bodies just. So when we are looking at these minds and souls, we cannot come up with the most transformational pedagogy unless we look at this complete personality of a human being, of a mind, of a soul. And that is what we are trying to do in higher education. Now, what we are also, what I also want to share with all of you is that since this year board exams were cancelled, and I am very happy that board exams were cancelled, because board exam never judge these characteristics of a student. They only judge the brain power, the memory power of a student, which is later on not so much helpful in life. But there are so many other dimensions of a student which are much more important, and we are not able to judge them through the board exam. And I'm sure that with Ranbeer ji and people like him, even CBSE will be able to come up with new modes of examinations. So now, since this year exams were cancelled, we were very happy. And the problem that we faced was, how do we identify the right students who have this kind of a mindset? And that is where the role of the principals and teachers became very important, because you have seen the growth of the child for so many years, 12 years, more than 12 years in some cases. And you know that what is their background, what is their interest, what is their mentality, what is their aspiration, what is their passion. And if schools and universities can work together to facilitate this journey, this smooth transition after 12th to college and to career, I think that is where a child's journey can be more and more meaningful. Otherwise, what happens is, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है, और हम students को discourage करते हैं कि आप just for career या just आपको किसी ने कुछ advice कर दिया, उसके कारण आप किसी गलत course में admission मत ले लेना. And just to fill our seats, we don't want कि कोई student हमारे course में admission ले ले जिसको उसमें interest ही ना, because ultimately that student will not be able to live a fulfilling life, and it will be a bad name for us as a university. So what we want is that principals and teachers can work very closely with the universities to ensure that those students who are interested in a particular field, who have that kind of a mindset, because every institution has a certain culture, right? I was at IT. Now IT has a very strong tech startup kind of a culture, right? So those students who are interested in that, probably that's the best place for them to go. Similarly, we feel that those students who are interested in social impact, we will be able to provide the right platform to them. And that is where we are working together with these schools, because now we are able to provide this exposure to the students in their class 9th onwards. We are working very closely with some schools, and we are growing our number of partnerships with the schools, so that 9th onwards, the students get introduced to these new ideas of social impact, of leadership, of entrepreneurship. And then the teachers also get trained in these concepts, and they are able to facilitate the transition of the student from class 12th to university, because they know the interest of the student. And based on the recommendation of the principals, we are able to give a lot of good scholarships to your students. So even if they're not able to afford, we are not after money. We are a non-profit university. So we provide a lot of scholarships, even full scholarships to the bright students if they're not able to afford the fee, so that we can ensure that their career is as per their passion. अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, they will, we know that they will give back money to support the education of the next generation. They will do that, but for that they should have the trust that someone supported them. So that is where we are very aggressively supporting a lot of students who through scholarships. We are also supporting the schools, because the schools who are like-minded, who want to promote this concept of social impact and innovation and entrepreneurship, we are working with their principals to set up the labs, train the teachers. A lot of support that can come from a university to a school, because we know that the school's resources are always very crunched, right? They're very short of resources. So the university is able to provide that kind of support to the schools, and together, in a very collaborative approach, we are able to build something that is very, very beautiful and very useful for the future generations.
And this is what, and I go back to what Ranbeer was saying, if India has to really stand like it was 2000 years ago as a Vishwaguru, there was a study that 25% of the world GDP, roughly 25, I think it was 23%, Angus Madison report, he says that roughly 23% of the world GDP was once Indian. Like India controlled 23% of world GDP. If we have to really reach back that situation, we have to build our country from ground up and take it to that level of Vishwaguru. And for that, our educational system, our institutions have to work very closely together. And that is where I see that schools and universities can play a big role in shaping the future of the country. And I invite all of you to discuss with us, to collaborate with us. I will be very happy to meet you also in person. Actually, today I happen to be in Devbhoomi, Uttarakhand. I belong to Sonipat, but we thought that this webinar is happening, so why not just be there and meet all of you from a little closer place, even if virtually. So I'm very happy to be here and be among all of you, to learn with all of you, and I very eagerly look forward to be able to collaborate and do something useful for the future generations together. Thank you so much. Thank you, Sahil ji. It has been very encouraging to have you on the panel, and I think the kind of approach the Rishihood has adopted is certainly going to make a difference in the career of students, not only the career, but the life of the students. I am too sure the kind of scholarship, the kind of benefits, the kind of curriculum you have, it will benefit the student who will join you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your time. Thank you so much. So Thank you, today with sir. us, Thank you so much. Ranbeer Bedi. Ranbeer Bedi, sir, he is the founder of Incredible Kids of India. Sir, I would like to request you to say a few words about Incredible Kids of India, because since starting we are explaining to the student that your profile will be highlighted on the platform, but they don't have all the information about it. So over to you, sir. Thank you, Shashiji, and I'm really privileged. Am I audible? Yes. Go ahead, Manveer ji, you are audible. Great. Okay. It just looks okay. I'm really privileged and honored to be on this platform, and would thank Mohanji and Shashiji to have invited me again and with me over here. And I really admire His Excellency Shri Ranbeerji's words. He covered two most important points. One, that we always, give an apple to a child, but should not stop at the zebra line. And second is connectivity with every child. What I've seen is each learner who comes to the school with strengths and challenges, along with a set of interests, talents, and aspirations. We, often discover some of these qualities over the course of the school year by having conversations or observing how each learner responds in class, or through a set of data and which has been collected from standardized testings. The big question: how do we record his achievements and growth chart during the school years? Think about the learners in your class and in your life. What are their strengths and challenges in how they learn? How do they need to prefer or need to access information, engage with content, express what they know, what and understand? What are their talents, interests, passions, and aspirations? These are very important questions. And understanding our learners can not only help a teacher to better design instruction and materials, but it can also help stakeholders, corporates, universities to pick up more talents which are lost, and also we can connect them to make their learning best. This is what we need today, because the very good talents, either move out of the country or are lost somewhere in this rush. So Incredible Kids of India is one such, initiative I'll just show you, is one such initiative to showcase their talents and their skill sets. So what kids do here is they create their profiles.
So which is the consolidation of their achievements during their school years. So this is how their 9th, 10th, 11th, 12th scholarly skills are at one place, so one can pick it up, and this is one link to the outer world. So his talents or her talents and skill set, her sports skills, everything is on one page, which is there's an algorithm, an AI-based algorithm backend, which is working. So when they upload the report cards and everything, and the certificates, their projects, to see their all certificates of a child right from nursery are uploaded. So one school year achievements dossier is made at one place, and this is not just required for one child or the ones who are here on this platform or anywhere, but every child in every school right from nursery to 12th could have their school year dossier. This is what is required. So and I believe the teachers and the principals over here could appreciate that this was a missing link, not in our country, but this is a global issue, that kids don't, make their brochure during the school years, the achievements brochure basically, and one link to the outer world. So this is which is absolutely free for the kids. They should go forward and come. So without taking much time, I would just say that many kids are left behind because of the opportunities they do not get in their life, and at the right time, and which we must, and this will end by saying that, and I would rather say that if opportunity doesn't knock, let's build the door for that in some other way. So thank you very much, Shashiji and Mohanji, for giving kids the privilege, to have their profiles done, and let's take it forward from here. Thank you very much. Thank you so much, sir. As time is very short, we should cut short on the programs. So before moving ahead, I just want to first of all thanks to Gayatri ma'am. Gayatri ma'am, she is a principal of BLM Academy, Haldwani, and she is for Edutalk. She is face of Uttarakhand. Thank you so much, ma'am, for your endless support. Thank you so much. We always feel like you were there. Then only everything was possible. Without you, nothing was possible. So I would like to take all the names of the principals who have joined us. BK Singh sir from DPS Dehradun, Dilip George sir from Doon International School, Anup Virmani sir from Sapiens School, Madhu Sharma ma'am from Bright Start International School, Rajesh Sharma sir from Himalayan Progressive School, Bharat Goel sir from Bhatim International School, Zarina Roshan ma'am from St. Paul's Senior Secondary School, Aryan Thakur sir from Rishihood School, Seema Sharda ma'am from Vintage Hall School, Dr. Manoj from JP Vidya Mandir School, Vishnu Prayag, Anita Sharma ma'am from Doon Defense International School. Thank you everyone for your support. And now I would like to request to Miss Mrinalini Gopinath Nair ma'am. She is a scientist at CRO Hyderabad, to say some few words about the observation on children's video games. Over to you, Mrinalini ma'am. Thank you, Shashi. Ma'am. And good evening, everybody. It's a pleasure to be amongst you all, listening to all these precious words that you all have shared with us. It was indeed enjoyable to listen to all the words that the students have shared with us during their sessions. Each one of them was so enthusiastic and so involved that it was with a lot of energy that they came up with their words. What I would like to suggest is, it is really nice, whoever will be talking now, if any child will be speaking now, if they can emphasize on why was this pandemic breakdown for them, and how did they come up with make it into a breakthrough, and how did they achieve transformation from the phase of transition. It would be wonderful to hear them if they can emphasize a little more on that.
And I wish all the children all the best. And it was really wonderful performance by each of the children who had participated in this program. Thank you. Over to Shashi. Shashiji, Yes. Shashiji, since we have not heard the DPS principal, Shri B.K. Singh ji. Yes, sir. I'm giving the all program to you now. Over to Okay. you. Please, Okay. yes. Please hand over. I'm handing over everything to you, sir. Please. Thank you very much, Shashi ji, and thanks Manbir ji and Mrinalini ji. It's been a tremendous amount of effort people put in to listen the tapes, and Mrinalini ji is known for her temperament and for her being meticulous about it. Even if it was handed over to her on the last minute, I think she does full justification to all this, and we have 100% trust, and we repose confidence in your judgments, which are always there. And Manbir ji being very large hearted to accommodate all children, maybe with gold or silver, that's irrespective of that, because children, once they come onto the forum, that is the important for us. Ladies and gentlemen, I just wish to tell you all one thing very important, that on 11th of September, the felicitation of this chapter will be done in the NCRT campus. So after having a word, I realized that all the principals deserves to be there in the NCRT. You all will be felicitated. The kind of contribution you have made in are tremendous. So we will in this program, because we've got your digital bites, we have seen, we have gone through the in entirety. We will now take up only with the principal who has not been able to so far appear on the panel. So I will request Dr. Shri B.K. Singh ji, the principal of Dehradun School, to please unmute and come on to the panel, sir. Very good evening, one and all present here. This is Very good evening, B.K. Singh ji. We are indeed very privileged to have you, and it was indeed very, great hearing to Ranbeer Singh ji, and we are all very privileged to have you on the panel. You know the topic, and Yes. I would like to request you to share how DPS is carrying forward the pedagogical plan in DPS school. Very good evening again to all educators. So I have basically 7:15. I have to join another webinar. Okay. I was waiting for my turn before 7. I will complete and then I will join again. So hardly I will give you 5 minutes. Yeah, please. So thank you very much for inviting me, Mr. Sharma, Dr. Yeah. Shashi. And this is certainly a platform where we can share our views, to interact with the educators like you all. Always, since last so many years, I am into this profession. It's almost 30 years I have completed in teaching profession as a teacher. Mr. Sharma introduced me, he is leading the school DPS Dehradun, but still I am a teacher there. I'm leading the school, but I'm a teacher because a teacher throughout his or her life remains a teacher, a learner. Then only we can learn something new. And we have learned a lot of things from our teachers, from you all educators. The topic for the day is pedagogical plan, a game changer. Very simple thing, I will tell you. Whenever we are planning for any question paper, our basic thing is to prepare a blueprint. If you are not preparing the blueprint, your question paper will not be a balanced question paper. If you are preparing for teaching learning process, your pedagogical plan is a very basic need. Your pedagogical plan means simple discipline in teaching.
how to teach, what to teach, when to teach. You have to prepare all the things. You have to plan well in advance. DPS Dehradun also following the pedagogical plans. Well in advance, we are preparing for the whole academic year. And we are sharing before the academic session to all our teachers with us, those who are working with us. Everybody is very well aware about the dates, about the exams, about the offs, chuttis, vacations, each and every about different functions. Since last 1.5 years, it was very difficult to control the things because teachers were not coming to school and we were interacting online only. But take care of it. When you are planning for this pedagogical plan, you should consider, you should take these 5 Please. into consideration. Shashi ji. Can you remove? Shashi ji, please. आरती श्री हनुमान जी की है, Yeah, absolutely, ये absolutely. भी बहुत जरूरी है. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. संध्या का समय है. यस यस यस. तो जब भी हम पेडागोजिकल प्लान अपने स्कूल की, as a leader, you are pedagogical leader. The principals are the pedagogical leaders. They have to discuss with their teachers, the senior teachers, those who are very learned people, those who are very seasoned one, those who are very experienced one. You can discuss the things, but take care of 5 steps while you are preparing a pedagogical plan. These 5 steps are very much important. And one of them is, if I will say, where are we as a school? What is your current status in your academics, in your sports, maybe cultural, maybe anywhere? Suppose I'm talking about 2021. What was the status of the school in the year 2021? This is step number 1. It should be included in your pedagogical plan. Next point should be, what do we need to do in coming year? What is our plan for the next academic session? Are we really working hard? Are we really planning for something new? And if you are adding this, if this is the target for next academic session, then you and your teachers, your team will be very much clear. If this is our target and anyhow we have to achieve it. This is very much important. After taking these 2 steps, when we are talking about the third one, how will we achieve what we want to do? This is the target fixed. Now, how to achieve this target? This is important. We want to be, I want to be an IAS officer, but do not want to open the book. I want to be a good cricketer, do not want to go for practice. I want to be a good swimmer, do not want to go for practice. We are planning a lot of things, but we are not doing accordingly. Take care of it. Your plan should be as per your resources, as per your plans. It should be very much implemented whatsoever you are planning for the coming year. So, how will you achieve these targets? It should be very much clear in your vision. The 4th step is, what is the timeline for implementation? It is also very much important. Have you fixed the time? This is 1 year. Within 1 year, we have to achieve this much. Next academic session, we will do this. Next academic session, we will do this. You can plan year-wise, you can plan for 3 years, you can plan for 5 years. That totally depends on you as a pedagogical leader. And another thing is, who is responsible? To whom you are giving the responsibility for achieving the target. Because if you are not fixing the responsibility, everybody will say, I don't know. I'm not aware about the plans. It should be very much clear with your teachers, with your management, with as a pedagogical leader, with you and your
The vice principal may be your headmaster. Everything should be very much clear. And then you can plan accordingly. And what will be the impact look like if we will complete this target? What will be the impact? So be very much smart and fix smart goals. In pedagogical plans, your goals are very much important. And these goals should not be goals only. You can change these goals into smart goals. When we will discuss smart goals, it will take a lot of time. Any other time, And I think, Singh Saab, you've been very, very precise. You have said those 5 cardinal principles which can help us formulate a pedagogical plan. Thank you, sir. And Thank you we very much. hand over, thank you. I hand over the charge to Gayatri ji to take a bite from the students who are, 2 students who are left to. Sharma ji, I'm leaving because I have Yeah, to yeah. one more. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Gayatri ji, those Right. two students. Yes, sure. Good evening, everyone. I'll take a quick bite from the students who have not spoken as yet. That is Lisha Aggarwal from Doon International School. Are you there? Lisha Lisha. Aggarwal from Doon International School. Are you there? Yes, sir. Lisha, unmute yourself. Am I audible? Yes. Oh, yes. yes, you are. And You are Lisha, as you are we sizzling. Lisha, as we are running out of time, and we have, Please. It's already 7:15, so it will be a very quick bite, just of a minute or so. And can you just, I would like to ask you this question. If you look back at the year of pandemic, right? And what would you call, was it a successful year for you? And what were the kind of skills that you incorporated in your life? And what were your learnings? Okay, so What talking about the pandemic. What Mrinalini Yes. ji mentioned, Mrinalini ji, you can again reiterate. I would like to suggest Okay. if they can say what was the impact of the pandemic and what pushed them into a breakdown, and what was the breakthrough that they could come up with, and how was this transitional phase made into a transformation, or how did they transform themselves over this transitional phase? If you could emphasize on this, there will be a lot of clarity on your thoughts. Lisha, you got it now? You got Yes, it? sir. Yes, sir. Go ahead. My name is Laisha, by the way. Laisha. Laisha. Oh, I'm All sorry. right. I'm sorry for spelling it wrong. Yeah, Thank you we'll. so much. Laisha. Yeah. Thank you so much. So, talking about the pandemic, when we were in lockdown and online school was not did not start yet. It was messy. A lot of things were not in place, and for me, especially, I'm a boarder, so my whole life is in schedule by the school. So my sports time is there, my study time is everything is balanced. But at home, I did not have a schedule. So it took me some time to set a timetable for myself. And at first, when the online school was not happening that fluently, what I did was I used to obviously I used to Google my questions and clear my doubts. And after the online school started, I had my teacher's number and I could contact them whenever I want. And one thing I noticed that people procrastinate a lot, like tend to procrastinate. So the online schooling and the pandemic, they made us realize that procrastination is very prevalent and we need to work on that. I myself procrastinated a lot, but later on I realized that I need to set a schedule and I need to study. And I'm also an IIT aspirant, so I had to set a schedule and give more time to study. And because of online school, what I could do was I used to cut short on my sports time at home and I used to study for my competitive exam. So that's all in a summarized way. Thank you for this opportunity.
Wonderful. So you've done a lot in the pandemic, I would say. You engaged yourself thoroughly with so many skills. I can see that even in sports and otherwise, you're occupying your time so well. That's really effective, and because it brings out the best in you. When you productively engage yourself. And the second question I would like to ask is to Isha Singh from Vantage Hall. Is she online? Yes, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. So I can't see you. Oh, there you are. Yeah, Isha. there she is. Yeah. Yes, Isha. Isha, Very so I would just like to ask, what were the challenges that you faced during online pandemic time, and how did you overcome them? What was your impact? Like, what was it like from, like we say, from breakdown to breakthrough? So, what was your breakthrough, and how did you manage to come about? Thank you for your question, ma'am. When the pandemic started, we did not actually expected the situation to last so long as it did. It was indeed a breakdown because I just completed my board examinations, and 11th I joined Vantage, and we had online classes only ever since I joined Vantage. So me being a shy student, I did not ask any question or any interaction with teachers during offline classes. But while online classes, it is like I take conversations with my teachers and started gathering information. It gave me a little confidence, so I became less hesitant to ask my doubts, and I could question them anytime. Or if I missed my classes, I had previous recordings. Exactly like she said, procrastination is there. I also piled up my works a lot, but uh, as a teachers previously also said, we have to give our country back what we are getting from our country. So I aim to become a doctor, so I have to work more. So I motivated myself, seeing that teachers are also working very hard to educate us, so we should also try learning. This motivation gave me a little bit confidence more. And plus, there are activities, many activities that help us with engage more in class. Like we have vivas, like, and individual plus group projects. These are also used for grading, so we have to be sincere, and we cannot just copy from Google on vivas and presentations because they check our basics. So that would help me a lot with our classes. That was wonderful. my Both, thank you. both, both the Thank girls you. have made a lot of difference. You have Thank you, done Isha. very well. I think uh, what we expected, you covered that. Gayatri ji, I think, yes, I think Gayatri ji. my connection is lost. Gayatri ji is traveling to Chandigarh and she's quite passionate about it. She has even, she's in connect with us from there. I think the only one person who's left to whom we have not heard is the BLM Academy, Vishnoiji. He's a youngster with lot of dynamism. I have heard his digital bite. Vishnoiji, are you there? Yes, sir. Good evening. Very good evening, विश्नोई जी. मैंने आपका डिजिटल बाइट देखा और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द काइंड ऑफ थॉट्स यू हैव अबाउट द pedagogical plan. I want to take your reflections about it only for 1 minute. Sure, sir. Please go ahead. Thank you, sir. Pedagogical planning is transformative as it liberates one from imprisoned ideas and set course for constructive designing. Good evening to Chief Guest Honorable Ranbeer Singh ji, Guest of Honor Shri Sahil Aggarwal ji, Jury Ms. Soumya Gulati ji, Deputy Director Blue Bills Group of Schools, Principals, teachers, students, and the organizers. A pedagogical plan sets a basis for school improvement, planning the academic year with activities and sports in details. In fact, it's a game changer. During the pandemic, our focus was on building knowledge
skills, creativity, and communication in our children. We focused on exploration of real-world problems by providing contents, projects to the students which were technologically driven. Our teaching approach was student-centered, with inquiry-based learning, role plays and skits, declamations, problem-solving assignments, among many others. Our long-term goal was to make students self-motivated and engaged learner. The focus on the pandemic was to enrich self-reflection in students, with teachers being the facilitators. Last but not the least, our endeavor is to shape our students who makes a difference in school, community, country, and the whole worldwide. Thank you. Jai Hind. I think it's well taken. You have only missed out one thing of thanking Mrinalini ji. Soumya ji is not there. She's not. Is perfectly okay. It's on the lighter side, but I think I was very impressed with your digital bite, because you were very sharp and you were very precise in making a point about the pedagogical plan. Keep it up, and well done. I think I hand over now to Mrinalini ji to announce the result. Thank you, Mohanji. Let me not delay any further. Oh yes. Coming to the results, the gold has been given to Neha Sharma from Bright Start International Academy, Kritika Chauhan from Bright Start International Academy, Ishita Singh, Vantage Hall School. Wow. There are 3 gold winners. Wow. Sarthak Singh from Bright Start International, Lavanya Malik from BPS Dehradun, Mohammad Anas from St. Paul Senior Secondary School, Manas Pant from BLM Academy, Yana Rai, Doon Defense International School, Parth Rathod, Doon International Defense International School, and Laisha Angral have got the silver medals. Coming to the bronze medals, Dipanshi Bameta, Sanjana Sunta, and Dev Upreti have got bronze medals. Thank you. Thank you, Mrinalini ji. Hand over to Shashi ji. Thank you, Mrinalini ma'am. Thank you for your time and your efforts. You have given full day for judging all the students, for listening their bites, and alone you have done wonderful job. Shashi, I would like to also make a mention. I am representing Incredible Kids of India. Yes, yes. Along with Soumya, we are- unfortunately, she is not able to be with us. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Mrinalini ji. Thank you. So, for all the principals, we are celebrating a felicitation program in NCRT on 11th September. So we will be felicitating all the student and all the pedagogical leaders there, in presence of Major Harsh ji and in presence of Director Sridhar Sarji. So we would like to invite you all there. Please book your tickets and please come over there. It would be a great a learning experience for you all, because their NEP NEP birth is from there only. They people will be there. They will be also giving some, their thoughts and ideas and about the goal which is behind NEP. And exactly how to learn NEP. Lot of things are there. So many people are speaking. We are also speaking. We are giving you a lot of tips and ideas. But that would be a right platform to come over there and to share the thoughts and ideas and to listen exactly to the right person, right people. I think we thank all the principals. Yes. Zarina ji, Madhu ji, Dilip George ji, Alok Virmani ji, Seema ji, BK Singh ji, Thakur Sahab, Bharat Goyal ji, Shikha ji, Shikha ji. Yes. I will not miss. I have learned very hard with. I wanted to have a bite of Vishnoi because I really liked it, because he was little too clear,
very, very sharp and very precise about it. So I never wanted to miss him. So thank you, one and all. I request all of you, as Shashiji has said, kindly book your tickets. It's going to be a physical event and it will be going to be worth, because you are going to have an interface with the NCERT, which is the Makkah and Medina for the learning of the CBSE schools. So you will have the opportunity of gaining a mileage for yourself, for your school. You have given 3 Sundays in, now the 4th Sunday is today. I, from my bottom of my heart, thank you all on behalf of Edutalk, and well done. All children have done very well. For me, they all are winners. There's And nobody. one of the most important things, sir, our journey is not stop here. No, Continuously, it's we going. will be doing a lot of things with all the schools in and also in Uttarakhand. We will be coming up with so many new topics with new ideas with some more We, schools. where Shashiji said very rightly, we have in pipeline Pondicherry, we have in pipeline the Varanasi, we have Jammu and Kashmir, we have in Chhattisgarh in pipeline, we have Telangana, and so there are 5 states which are in pipeline, and this is all because of your love. And thank you very much, incredible Mrinalini ji. I am little too impressed with the kind of work you do, the kind of dedication you have, the kind of preciseness you have. I mean, I was going through the messages which was floating right and left. Devapriti is not opening. This is not. Absolutely. Ma'am was very concerned about every That's how. child. She That's was how asking, the passion is. Yeah, yes, absolutely. she was asking everything. Yes. Absolutely. And thank you, Ranbeer ji. I think Yes, it is Ranbeer sir, thank you well so done. much. And Mrinalini ma'am, thank you so much for giving the opportunity to the student. And thank you, all the students. Well done. Keep it up. We We'll will be come back. back. We will be coming We back, will be and our back. program is on 11th of Absolutely. September. Don't forget. Absolutely. Thank you, sir. Thank There you. will be a Thank you. Thank felicitation you. program for And all thank the you, Thank you very Gayatri ji. much. Thank you, everybody. Gayatri ji is at my net. Thank you. All right. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye, giving us teachers. this All. everyone. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.